Friends, this is Dr. Sajjad Mani. Today, the topic of this video is Africa, the continent of Africa. Africa, it is the second largest continent in the world next to Asia in terms of size. So, Africa is the second largest continent in the world and it has 54 independent nations. Most of the books they still write 53 nations, but as we know that the Sudan was divided into Sudan and South Sudan, so South Sudan was the 54th independent nation in Africa. So, there are 54 independent nations in Africa. Africa, it is the continent through which Tropic of Cancer, the Equator, Tropic of Capricorn and even the prime meridian cross. So, Africa के through Equator भी pass होता है. Tropic of Cancer means 23 holes 1 by 2 degree north latitude. Tropic of Capricorn means 23 holes 1 by 2 degrees south latitude. And prime meridian means 0 degree meridian of longitude. ये सारे पास होते हैं. इसका मतलब ये है that अफ्रीका का एक पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, दूसरा पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में है और अफ्रीका को हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी डिवाइड कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स अफ्रीका लाइज इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स ऑफ द ग्लोब. सो दिस इज द फिजिकल मैप ऑफ अफ्रीका. मैप थोड़ा सा पुराना है लेकिन आपको अफ्रीका का आइडिया आ जाएगा. द अफ्रीकन कंटिनेंट इट इज ब्रॉड टुवर्ड्स नॉर्थ एंड इट टैपर्स टुवर्ड्स द साउथ. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस इज द इक्वेटर and this is the Tropic of Cancer, and here we have the 0 degree meridian or prime meridian. So these lines they divide Africa into the northern hemisphere, into the southern hemisphere. This we can see it is the eastern and it is the western hemisphere. So Africa lies in all the hemispheres, and in this map आप देख सकते हैं that Africa is surrounded by oceans. Here it is the Atlantic Ocean in the west, the Indian Ocean in the east, and Africa it is divided from Asia by this sea, that is the Red Sea, and it is divided from Europe by Mediterranean Sea. वो आप एक दूसरी डायग्राम में और दूसरे मैप में देखोगे. So this is the physical map of Africa. यहाँ पे आप अटलांटिक ओशन देख सकते हो, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे रेड सी है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है. जो मैंने अभी बोला, मेडिटेरेनियन सी डिवाइड्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप एंड रेड सी डिवाइड्स अफ्रीका फ्रॉम एशिया. एंड दिस स्मॉल पार्ट विच इज एन isthmus connects अफ्रीका टू एशिया. व्हाट इज एन isthmus? isthmus एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है, लैंड का एक स्ट्रिप होता है which connects two large land masses, and this isthmus it is known as the isthmus of Suez. isthmus of Suez. और ये isthmus of Suez it's the part of Egypt, and Egypt is a country in Africa. फिजिकल मैप में आप यहाँ पे इस एरिया को देख सकते हैं. दिस इज द नॉर्थ वेस्ट पोर्शन ऑफ अफ्रीका. यहाँ पे एटलस माउंटेन्स आपको दिखेंगी. And this whole area, the northern area and the western area of Africa, it contains the large desert known as the Sahara Desert. And here in this part we have the Kalahari Desert and the Namib Desert. These are some of the deserts of Africa. They lie on the southern parts of Africa. Here we have a large basin of a river known as the Congo River. And here we have the Nile basin. We have the Nile river flowing through this part, and here we have the largest lake, Lake Victoria, and we have some other lakes here and here. Here we have the Madagascar, which is the largest island of Africa. So, and here we have some other rivers. This portion is known as the Rift Valley, the Great Rift Valley. So these are some of the features which you can see in the physical map of Africa. हम आगे चलेंगे. Historically अफ्रीका को हम कहते हैं it is the dark continent, और most of the countries of Africa they were colonized by the European countries, by France, by British, by Spanish people, by Belgium, by Spain, and so many, Germany, Portugal.
except these two countries here and here. These two countries, they were never colonized. These two countries are, here it is Liberia and here it is Ethiopia. So Liberia and Ethiopia, they are the only African countries which have never been colonized. Liberia is on the western part of Africa and Ethiopia is in the eastern part of Africa. आगे चलेंगे. अफ्रीका जो जैसा आपने मैप में देखा, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप by the Mediterranean Sea, जैसा आपने मैप में देखा, and from Asia by the Red Sea, and it is connected with Asia by the Isthmus of Suez. Isthmus of Suez और Isthmus of Suez के बीचों बीच Suez Canal पास होता है. So what is the Sinai Peninsula? Sinai Peninsula means that part of Egypt which lies east of the Suez Canal. Means here we have this यहाँ से Suez Canal पास होता है. And this whole portion, it is known as the Isthmus of Suez. Isthmus of Suez. And this eastern portion of Isthmus of Suez, it is known as the Sinai Peninsula. Although it is the part of Egypt, but it lies in Asia, and politically it belongs to Africa. Next, Africa. The whole continent of Africa, it appears as a huge plateau. You all know that it's a table-shaped land, and there are no elongated parallel ranges in Africa. जैसा आप नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज देखते हो, साउथ अमेरिका में आपके एंडीज हैं, एशिया में हिमालयाज हैं, एल्प्स हैं एंड डिफरेंट माउंटेन्स. लेकिन अफ्रीका में ऐसा कोई भी इतना लंबा elongated mountain range नहीं है. As a general rule, the African plateau or the African tableland, it is higher in the east and in the south, and it is lower in the west and in the north. Means जो western countries हैं या northern countries हैं, they are low lying, उनका altitude कम है as compared to the countries in east and south. In fact, the countries in north like Morocco, Algeria and Tunisia, they are the countries having the least altitude. आगे चलेंगे. The deserts of Africa. The important deserts are the Sahara Desert, the Kalahari Desert, the Namib Desert. In fact, there is the Libyan Desert. Sahara Desert, it is the largest hot desert in the world, and it extends from the Atlantic Ocean to the Red Sea, जैसा आपने अभी मैप में देखा. The Kalahari Desert and the Namib Desert, ये भी आपने मैप में ये दोनों deserts देख ली. These deserts, they are located in the southern Africa, mainly on the borders or within the countries of Botswana and Namibia. So ये तीनों deserts आपने अभी मैप में देख ली. ये है मैप. यहाँ पे है Saharan Desert, जैसा कि मैंने बोला, it lies in the north and western part of Africa and is the largest desert in the world. और यहाँ पे आपका कालाहारी डेजर्ट है और यहाँ पे आपका नामिब डेजर्ट है. यहाँ पे आपका नामीबिया है और यहाँ पे आपका बोट्सवाना है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका. द माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है? माउंट किलिमंजारो है, माउंट कीनिया है, द रेवेंजोरी माउंटेन्स है. दीज लाई इन द ईस्ट अफ्रीका. नॉर्दर्न अफ्रीका में आपके एटलस माउंटेन्स हैं, जैसा आपने मैप में देखा. वेस्ट अफ्रीका में आपके कैमरून हाईलैंड्स हैं, जिनमें माउंट कैमरून सबसे हाईएस्ट पीक है. और साउथर्न अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में आपके केप रेंजेस हैं. ये आप याद रख सकते हैं. आगे चलेंगे. माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका. द किलिमंजारो. द किलिमंजारो इज फाउंड इन तंजानिया. इट इज प्रेजेंट ऑन द ईस्टर्न रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली जो अफ्रीका में है, जैसा आपने मैप में देखा, उसके दो पार्ट्स हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न. और ईस्टर्न रिफ्ट वैली में बहुत सारे वॉल्कनोज हैं, उनमें से एक किलिमंजारो भी है. इट इज प्रेजेंट इन द कंट्री ऑफ तंजानिया. दूसरा है माउंट कीनिया. इट इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका. इट लाइज इन द कंट्री ऑफ कीनिया और ये भी ईस्टर्न रिफ्ट वॉल्कनोज में काउंट किया जाता है. और यहाँ पे माउंट एल्गन है, ये भी ईस्टर्न रिफ्ट वॉल्कनोज में काउंट किया जाता है, ये युगांडा में है. माउंट स्टैनली, ये रेवेंजोरी माउंटेन्स में है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में. इट इज प्रेजेंट इन द युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. माउंट तुबकल. माउंट तुबकल, इट इज द highest peak in Atlas Mountains present in Morocco,
And Mount Cameroon, it is the highest peak present in Cameroon in the Cameroon Highlands. आगे चलेंगे. Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro, it is the highest mountain in Africa. It is the highest point in Africa. It is present in the country of Tanzania. Mount Kilimanjaro has two peaks. One is Kibu, other is Mawenzi. Mount Kenya, it is the second highest peak in Africa. It is present in Kenya. Both these mountains, they are inactive volcanoes and have permanent snow at their peaks. आप कहोगे इन पे स्नो क्यों है, हालांकि ये तो इक्वेटोरियल रीजन में है. स्नो इसलिए है क्योंकि इनका ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है. सो इक्वेटोरियल रीजन पे भी हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पे स्नो एंड आइस होता है. द रिवर्स ऑफ अफ्रीका. नाइल, इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. Congo River, it is the second longest river in Africa after Nile, and in terms of discharge per second or discharge per hour or discharge per day, the amount of water, the discharge in terms of its volume, it is second only to the Amazon River. ये पॉइंट आपको याद रखना है. Congo River, it is the deepest river system in the world. And the river Niger. The river Niger is the third longest river in Africa. It flows through the West Africa through Nigeria as well. Next, Zambezi. Zambezi river, ये southern parts of Africa में flow होता है. इस पे Victoria Falls हैं, which is the largest waterfall in the world. और ये flow कहाँ से होता है? It flows along Zambia-Zimbabwe border. ये आप कैसे याद रख सकते हो? Zambe has been derived from Zambia and Z has been derived from Zimbabwe. So Zambezi flows along Zambia-Zimbabwe border. Orange River, ये स्टार्ट होता है ड्रैकन्सबर्ग रेंज से. ड्रैकन्सबर्ग रेंज है कहाँ? ये लिसोथो में है. लिसोथो, it is a country, it is a landlocked country, and this country, it is surrounded by South Africa. So Orange River, it starts from Lesotho, passes through South Africa and Namibia border. Its main tributary is River Vaal, and finally this Orange River, it flows into the Indian Ocean. Limpopo River, it is also known as Crocodile River. ये साउथ अफ्रीका से पास होता है, फिर मोजाम्बिक में और फिर इंडियन ओशन में. सेनेगल रिवर, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में फ्लो होता है. इट फ्लोज अलोंग द बॉर्डर ऑफ मॉरिटानिया एंड सेनेगल एंड फाइनली फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन. The most important river of Africa is River Nile. River Nile is the longest river in the world. इसके दो पार्ट्स हैं, एक को हम बोलते हैं वाइट नाइल, दूसरे को हम बोलते हैं ब्लू नाइल. दे आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ नाइल. वाइट नाइल ये स्टार्ट होता है लेक विक्टोरिया से और ब्लू नाइल ये स्टार्ट होता है लेक ताना से इन इथियोपिया. द वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल ये दोनों कन्वर्ज होते हैं इन द सिटी ऑफ खार्तूम. खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान. सो वाइट नाइल फ्रॉम विक्टोरिया, ब्लू नाइल फ्रॉम लेक ताना, ये दोनों कन्वर्ज होते हैं एट खार्तूम. फिर ये फ्लो होते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ थ्रू द न्यूबियन डेजर्ट ऑफ इजिप्ट और उसके बाद ये पहुंच जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में. और यहाँ पे रिवर नाइल एक बड़ा सा डेल्टा बनाता है. ये रिवर नाइल है एंड दिस इज द वाइट नाइल. वाइट नाइल ओरिजिनेट होता है लेक विक्टोरिया से, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका. और यहाँ पे ये ब्लू नाइल है, ये ओरिजिनेट होता है लेक ताना से. लेक ताना इथियोपिया में है. और लेक विक्टोरिया, इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ तंजानिया, युगांडा एंड कीनिया. यहाँ से वाइट नाइल आ गया, यहाँ से ब्लू नाइल आ गया एंड दे कन्वर्ज एट खार्तूम. खार्तूम जैसा कि मैंने अभी बोला, इट इज़ द कैपिटल ऑफ सूडान. और यहाँ से ये चलते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइल और फ्लो होते हैं इन मेडिटेरेनियन सी इन द फॉर्म ऑफ ए डेल्टा. यहाँ पे एक और पॉइंट आप मैप में देख सकते हैं, लेक नासिर. यहाँ पे आसवान डैम है इन इजिप्ट दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन नाइल. और जो आसवान डैम के पीछे रिजर्वायर बनता है उसको हम बोलते हैं लेक नासिर. ये आप याद रख सकते हैं.